learn the basics of like open source stuff like GitHub and stuff. Okay, so I'll be sharing my screen. Please someone confirm that whether my screen is visible or not. Hmm. Yeah, it's Is still it loading visible? actually. Now? Still loading for me. I'm not sure if it's an issue with my data or yeah, now it's visible. Yes. Now? Yeah, it's visible. Visible? Yeah, it's visible. Okay. Yeah, it's visible. Okay. Now, Yeah, it's visible, Sachin. We can see your screen. anyone? Okay, fine. So we'll be starting with what is open source. When I was in my freshman year, right? So a lot of people were like discussing domains like ML, AI, and stuff. There are a lot of things. Yeah, but someone told me that something is there that is called open source. So a lot of beginners have this confusion. Like, what is open source? What exactly is open source? Basically, open source is the refer to the open source projects or the softwares that whose code is publicly available. Okay, like anyone, like even I can download the whole code of VLC Media Player or Mozilla Firefox right to my PC. It is because that complete code is There is completely some like disturbance in publicly your accessible. voice. So that is open source. Hello, hello. Yeah, now Yeah, it's fine. I There think is it was some breaking. disturbance. Yeah, I Yeah. think it was breaking a bit sometime Okay, before. okay. Yeah, but now it's fine. So yeah, you can start. You can go Is ahead. it fine now? Okay, Now yeah. is it fine? Again, it's breaking a bit. Can someone else confirm? Is the voice breaking only for me or? No, it's breaking for me also. It's breaking for me also, bro. Okay. Yeah, yeah. Okay. Sachin, Wait a minute. maybe you can. I'll reshare. Like I'll Yes, reshare my yeah, screen and then. just yeah. You can Yeah. just rejoin Wait maybe. a minute. I'm rejoining. Just rejoining Yes, it. yes, yeah, yeah. Yeah. So meanwhile, while we wait for Sachin, does anyone want to just give a brief intro about themselves Hello. and what you're here for, and anything? Hello. Am I So, audible? hello Yeah, everyone. Okay. Am I audible now? Yeah. Yeah, you are audible now. yeah, you're Now audible. is my voice cracking? Like is it good now? It is good, Yeah, yeah. It's it's Yeah. better. better. Yeah. Yes. Cool. Yeah. Yeah. Okay. So I was speaking about open source. Okay. A lot of Hmm. like beginners and have this, or the people who have not started open source have this confusion is like what is open source. So open source is definitely like the organizations or the codes which are publicly accessible. Okay, for example, you can take Mozilla Firefox. You can get the entire Mozilla Firefox code on GitHub directly. The software you are using, you can get the direct code of it from GitHub. Like VLC Media Sachin, Player, I open think source your projects, voice Red is Hat, and breaking again. Can someone confirm? Is it only for me? I Devesh, don't is it know breaking for what you? is. Yes, it was breaking. But I think Um, we should try after I some time. don't I know think it what. will get good or something. Hmm. So Um, Sachin, can you I try don't know joining what is the maybe from issue your actually. if you're using your Okay, Wi-Fi, maybe you can try your mobile hotspot. Maybe that'll be better. okay. I'm trying it out. Okay, 1 minute. Ha. So, meanwhile, we got cut short. So, Devesh, I think you're about to give an intro, right? When Sachin interrupted. Yeah. Hi everyone, my name is Devesh Sharma. I am currently first year. In first year, I am doing my BTech from Dr. Akhilesh Das Gupta, formerly known as Northern College of Engineering in Delhi. I am doing it in IT branch. So I am just a beginner. I know Python in advanced level. I just started web development and hoping to start C++ in the future. That's that's great, Devesh. Does anyone want to give an intro? Just a brief intro on what you're looking for from here, and just so that we can understand each other better.
Could anyone confirm? Yeah, Yeah, you're Sachin, you are audible. audible. You are audible. Hello? My voice is audible or not? Like, could anyone Yeah, please it's audible. It's audible. It's audible. But I still think it's breaking a bit. But let's see. It's too early to say. share my screen and then you guys confirm that whether it is audible or not. Like now, is it audible? Like, is it cracking? Hello? No, no, no. Right now it's not cracking. It's perfectly audible. It's perfect, right? Yeah, yeah, yeah. Okay. So, like, sorry for the trouble. I don't know what is the issue exactly. There might be some network issue. But where was I? I was speaking about open source. Okay, open source software is like the code that is designed to be publicly accessible. Anyone can see it, modify it, and distribute the code as if they see fit. Okay, so if there is some issue in or bug in like VLC media player, and if I find it, then I can go to its GitHub repository, I can create an issue, and I can do the changes. And if my changes are valid after several verifications, my code will be accepted. So by sitting in my living room, I can contribute to one of the biggest media players in the world. That is the power of open source. Okay, so I have prepared some lists and prerequisites. What are the prerequisites for open source? So we'll be moving to the next slide and let's see what are the prerequisites for the open source. Okay, so for open source, you need to have like basic understanding of Git. It is a version control system. What is the meaning of that? Meaning of that is it controls the version of, or it tracks the version. It tracks the version of your project. Suppose that your projects have 8 lines of code right now, and you modify that 8 lines of code to 9 lines of code right now. Then this Git will track what changes have you made, how many, like at what time have you made. So everything, it will like track all of your changes, okay, that you have made in your projects. So that is why it is called version control system. It tracks the version of your project. Okay, that is why it is called. Now the second point, the person Sorry. who's hello, is my voice audible? Hello? Yeah, Yeah, yeah. it's audible. It's Okay, audible. cool. One more Okay, thing. okay. Sorry to intersect, Sachin, but guys, if Yeah. you have any doubts, feel free to As drop they it can out ask. in the event discussion channel, or you can always unmute yourself and speak. You can do either of the things in case you have a doubt. Yeah, Yeah. go ahead, Sachin. Yeah. Okay. Now, the second thing you need to start open source is like knowledge about the hosting websites. Like there are lots of hosting websites like GitHub, GitLab. There are different hosting websites. Why we call them a hosting website? Because they host our repositories. Now a question arises, then Sachin, tell me know what is repository and what are the keywords, like idea of keywords. You don't have the idea of keywords, like repository, fork, star. So let me tell you about repository. What is repository? First of all, repository can be defined as a folder. Okay, folder of a like particular folder in which all the code is contained. A particular folder in which all the and that folder is hosted on sites like GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Okay. Now the second term is like fork. What is the meaning of fork? If suppose that any of you, let's suppose that Shashwat has created a project and he has uploaded on GitHub. I like that project. But I want that project to be on my profile. I just want to copy that. I just want to copy that exact project what Shashwat has made and uploaded on GitHub. I just want to copy that project and put it on my profile. Like it is done like fork. We do fork. Okay, I will go at Shashwat repository and I'll fork that repository, and that repository will be like a duplicate copy will be made at my profile. So that is what fork means. Now star is a form of appreciation. Like we star a repository, it is a form of appreciation. If you like the repository, if suppose that Shashwat has made a good app that is working fine, that is everything is working fine, so I'll star that repository. I'll mark it. I will star it. Is it? You can consider it as a form of appreciation. Okay. Now, one of the most important thing, like we Bro, I all have of a us, doubt. yeah, definitely. Bro, fork doesn't mean plagiarism, no? You can No, no, copy no, the no. test, but you have to do some changes.
to make it better, or you can copy directly? Mostly we fork someone else's project, he gets notified, like you can see who forked whose project. Okay, so fork usually we do to contribute to that open source, uh, to contribute to that project. Okay, suppose that I'm So contributing, we I want want to to upgrade the project or some changes so it can be better. yeah, uh, Okay. I'm telling you, Thanks. yeah, suppose that you have made a app. Okay, it is a weather app. Okay, but I use your weather app and I see that there are some bugs, and you tell me that Sachin, please fix those bugs. In order to fix those bugs, I need to have that code on my PC, right? So we do not clone that project from your profile to our PC. First of all, we fork it and we take that into our profile. Why we fork this? To keep that to keep tracks or the branches. It is a like, I wouldn't be going in that deep. So there are like changes in the branches. So just it is a convention, you can say. We fork it into our profile and then we clone that repository to our computer, and then we put out the changes, like do the changes, and then we push it back again to the remote. Remote means internet on or the GitHub. Okay, we push it to the GitHub, and then we like generate a pull request. So these are some Git terms and GitHub terms. I guess you have visited attended the last session which was done by my like our fellow mates. That was basically on Git, and if you have attended that, you must have the basic understanding of Git. Okay, so here ends the like third point. Now, idea of open source projects of your domain. Suppose that if you don't know like which open source projects you have to contribute, like what are the projects, like how you will find your projects of your domain. Suppose I am doing web development, I need to contribute to the projects which are based on web development, right? How to find that? I'll be going in on that question, how to find that. I'll be doing in the next slide. Okay, so we should have the idea, of the open source projects. We should know that okay, this organization, it works on this domain. Okay, like for example, there is one organization named as Catrobat. It is a very one of the most famous organization, open source organization. And Catrobat works on web development, iOS development, Java development, Scala, and there are like lots of projects on different tech domains. Okay, so I know that Catrobat because it is based on iOS development also, and I do iOS development. Okay, so that is how I know that there are some organizations which works on iOS development. So we should have the idea of open source projects of our domain. In which domain like we do either web development, AI, ML, data structures algorithms also. Plus, there are iOS development and stuff, Java development, C++, and lots out there. Okay. Now the last point is idea of open source programs and events. Like open source programs and events are one of the like most important things if you want to like develop your network, improve your like increase your network, plus you want to become a good open source contributor. Like I participated last year, I participated in LGMSOC, Let's Grow More Summer of Code, and there I contributed on a website called Voters Registration Portal. Okay, there like it helped me improve my open source skills as well, like improve my command on Git and GitHub, improve my development skills as well, because I was contributing to a front end back end thing. Okay, so it helped me improve my Bro, are you development as referring to well. GSOC? Hello. Bro, are you referring to GSOC? No, I am referring to LGM SOC. Let's grow more summer of code. Okay, Okay. I'll be sharing the list of like 28 to 30 open source programs right in the next slide. Okay, so wait for it. You can participate in all of them. Like two or three are like yet to start. Like they'll be starting from like 5 days after 5 days. So you can participate in them. Not like we should start if you we are a beginner, right? So we should start like taking small steps first. Like we should like know how what is Git, how things work. Okay, so back then I participated in LGMSOC, and then with the help of that I like developed my network, I increased my network. So open source programs will help you improve your like skills as well, development plus GitHub skills.
first thing. Second thing is they will help you to improve your network as well. Okay, so these are the two benefits of open source programs and events. And like there are lots of tons of events which are going to come in the next few months. I'll be telling you right now. Okay, there are lots of events, and by which you can learn, improve your development skills. Like it's like very high. Like there are like insane number of chances like you can improve your development skills. You will develop if you are like contributing to any open source program, right? And under any mentor, you are just contributing to that open source project of your domain. Let's say web development. So you are giving the code changes or you are writing the changes in web development, right? So you are improving your development skills as well. And apart from that, you will be like improving your GitHub skills, all of them. Okay, so here these were the prerequisites according to me, and this I followed in my like freshman year. I understood GitHub and stuff, and I like explored open source projects, and I also participated in open source events. Okay, so let's moving to the like next slide. What are the resources? Now this is very important. Like चलो सचिन भाई बता तो दिए कि गिटहब करना होता है, लेकिन कहाँ से करना होता है ये तो, और कहाँ से नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे दैट बहुत सारे हैं गिटहब के ट्यूटोरियल. बट एज दिस इवेंट इज लाइक बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, सो आई विल बी टेलिंग यू गाइस about like how I did or like what resources did I follow. Okay, so the complete Git and GitHub tutorial, this is by Code with Harry. I'll sharing the link of all of this like playlist and stuff with you guys, so don't worry, I'll be sharing in the Discord itself. So after this session I'll be sharing all the links, all the resources with you. So this is complete Git and GitHub tutorial. Let me go to that. Yeah, so as you can see, it has like 11 videos. Everything has been discussed in detail. I have seen this. Everything has been discussed in detail, and you can just go to this and start doing. Just do 11 videos. I guess like you will be a very good at GitHub, like Git and GitHub both. And after that, if you keep practicing, if you keep contributing to open source, you will get better. You will get better by time. Okay, not everything can be done in one night, right? So you will get better by time if you like learn. First of all, you need to learn this. Like 11 videos, it is not much more, like 10 videos per minute. So it is like I followed this from starting to begin, like starting to end. I followed this, and by that half an hour, 1 hour, 2 hour, but it is not like that. He has explained everything, कोड विद so you हैरी can. की भी एक वो भी है, मतलब 2 आवर्स की वीडियो. हाँ हाँ, बट इसमें उन्होंने ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया. मैंने वो भी देखा था, बट मैंने इसको भी देखा. इन्होंने उसमें हर जैसे कि उन्होंने जैसे कैसे बोलते हैं, नोटपैड के फाइल को भी उन्होंने गिटहब से चेंज करके दिखाया है कि नोटपैड में ये चेंजेस किए या फिर यहाँ चेंजेस किए, तो वो दिखाया. बट आई फेल्ट दैट एज उन्होंने 2 घंटे की वीडियो भी होगी उनकी, है शायद. ओके, बट मेरे हिसाब से मैंने जो फॉलो किया था, इट इज दैट थिंग. ओके, मेरे हिसाब से ये बहुत सही है. ये 11 वीडियोस जो हैं बहुत सही हैं, एंड ये 11 वीडियो से लाइक यू विल गेट अ लॉट. आई लाइक गिटहब का सब चीज, ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कवर हो ही गई हैं इस चीजों में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग. हियर इट इज. हाउ टू फाइंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ योर डोमेन. चलो, ये तो है कि अपने, अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स में मैं कंट्रीब्यूट करूं. मैंने क्या किया था, मैंने उसी तरीके से आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था. मैं गया था गूगल समर ऑफ कोड के वेबसाइट पे. मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये गूगल समर ऑफ कोड का ये वेबसाइट खुल जाएगा. यहाँ पे इन्होंने कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ पे हैं, सारे यहाँ दिख जाते हैं. यहाँ पे पहले सर्च बटन भी यहाँ हुआ करता था, बट इन्होंने हटा दिया, पता नहीं क्यों. बट अब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा. सो यहाँ पे सर्च बटन जब भी होता तो हम क्या करते कि iOS सर्च कर देते या फिर वेब सर्च कर देते, तो वेब के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं. बट अब वैसा नहीं है, अब इन्होंने हटा दिया, तो वी हैव टू सर्च लाइक मैनुअली. लेट्स सपोज हम इस पे क्लिक करते हैं, सी ये वेब और iOS दोनों. हाँ, सो ये देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों लिखा हुआ है, राइट. वेब के भी, अगर आपको वेब करना है जावास्क्रिप्ट, अगर आप वेब डेवलपमेंट इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो.
एंड्रॉयड आता है, एंड्रॉयड में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके प्रोजेक्ट्स लाइक मल्टीपल डोमेन्स में होते हैं। ओके, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मल्टीपल डोमेन्स में होते हैं। मशीन लर्निंग पसंद है तो मशीन लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इनका शायद वेबसाइट खुलेगा, हाँ वेबसाइट है, एंड देन इनका गिटहब या गिटलैब रिपोजिटरी, गिटलैब ही खुलेगा, हाँ। सो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ये मुझे मिल गया। अब मुझे पता चल गया कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब में भी काम करती है, iOS में भी काम करती है, वेब में भी काम करती है, एंड्रॉयड में भी काम करती है। तो सपोज मैं अगर iOS करता हूँ तो मैं iOS में चला जाऊंगा, इसको लाइक फोर्क कर लूंगा एंड देन आई सी, पहले मैं देखूंगा कि इनके ऐप में दिक्कतें क्या हैं, व्हाट आर द बग्स। पहले मैं देखूंगा इनके ऐप में दिक्कतें क्या हैं, व्हाट आर द बग्स, एंड देन मैं उस बग का एक इशू क्रिएट करूंगा एंड देन आई like perform respectively. I'll not go in that deep कैसे issue create करना है, that has I guess already been done in like git session and stuff. Okay, so ऐसे हम जो है ये अपने डोमेन के ये जो है प्रोजेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। गिट एंड गिटहब मैंने ऐसे किया था और कुछ पे मैंने लाइक कंट्रीब्यूट किया था। ओके, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू इक्लिप्स आल्सो, कैट्रोबैट आल्सो। इक्लिप्स अगर बहुत लोग जानते हो तो जावा का एक फेमस आईडीई है। ओके, सो आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट आल्सो। इट वाज अ बिगिनर फ्रेंडली इशू 1 ईयर बैक, आई कंट्रीब्यूटेड टू दैट आल्सो। सो ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि अगर बड़े लाइक सपोज बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये, लाइक बड़े कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके जो इश्यूज होंगे वो बहुत बड़े वो होते हैं। नॉर्मली जनरली लाइक बहुत बड़े इश्यूज होते हैं, उनके लिए पूरा कोड बेस समझना पड़ता है, बट ऐसा हर में नहीं होता। गुड फर्स्ट इश्यूज होते हैं गिट पे, अरे गिटहब पे, एंड देन गुड फर्स्ट इश्यूज सिर्फ बिगिनर्स के लिए बनाए होते हैं कि चलो बिगिनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं ओपन सोर्स वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गुड फर्स्ट इश्यूज तो को पता सॉल्व कैसे करके भी। चलेगा कि गुड फॉर बिगनर्स है या फिर इसके लिए थोड़ी एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए? क्या फिर से, हेलो? मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिगनर फ्रेंडली हैं, मतलब कि जिसमें बिगनर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर थोड़े हाई लेवल के हैं? नॉर्मली सारे प्रोजेक्ट्स में दोनों कैटेगरीज होते हैं। गुड फर्स्ट इश्यूज में जैसे कि मैंने इक्लिप्स में कंट्रीब्यूट किया था। इक्लिप्स एक फेमस जावा आईडी है, तो इक्लिप्स अगर मैं किसी को बोलूंगा कि इक्लिप्स में मैंने कंट्रीब्यूट किया था तो वो समझेगा कि इसने 50 लाइन का कोड मतलब 50 पेज का कोड लिखा होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उनमें बड़े कोड्स होते हैं, बड़े चेंजेस होते हैं, आपको बड़े रेक्टिफाई करने होते हैं बग्स। उसके लिए आपको पूरा कोड बेस समझना होता है कि कैसे वो काम कर रहा है। लेकिन जो मैं बिगिनर्स के लिए जो बात कर रहा हूँ, गुड फर्स्ट इश्यूज पे टैग लगा होता है, गुड फर्स्ट इश्यूज। वो इश्यूज जो है वो छोटे लाइक जो बिगिनर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो लोग कर सकते हैं। वो लोग थोड़े से रिसोर्सेज फॉलो करके वो किया जा सकता है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें गुड फर्स्ट इश्यूज रहते हैं, मतलब अगर नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे ऑर्ग पे दो, लेकिन गुड फर्स्ट इश्यूज मिलते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं, बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सो बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ गुड फर्स्ट इश्यूज होते ही हैं, नॉर्मली जनरल लाइक मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, सो ऐसे मैंने ऐसे ही फाइंड किया था। यहाँ पे गिटलैब खुद ओपन सोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, गिटलैब हो गया, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कैट्रोबैट एज आई टोल्ड यू, ये iOS वगैरह पे स्विफ्ट, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड, कॉटलिन, ये आप यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर जावास्क्रिप्ट यानी कि वेब, एंड्रॉयड तो स्विफ्ट iOS के लिए, एंड कॉटलिन एंड स्टफ। तो जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें आप कर सकते हो। ओके, सो ऐसे जो है आप ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स फाइंड कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे वेब आता है तो मैं वेब के प्रोजेक्ट्स ऐसे फाइंड करता हूँ। नाउ लेट्स मूविंग टू द सेकंड थिंग। ओके, प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस्ड। अब ये जो है, अब मैं लेट मी क्लिक। ओके, सो वन ऑफ माय कनेक्शंस मेड दिस पोस्ट ऑन डेव पोस्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको 28 गिन के 28 ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के लिस्ट मिल जाएगी कि कब स्टार्ट होते हैं, कितना स्टाइपेंड होता है, लाइक सारी चीजें कि लाइक रिमोट होता है, पेड होता है, अनपेड होता है, कितने महीने का होता है, सारी चीजें मिल जाएंगी। आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक विथ यू ऑल। सारी रिसोर्सेज आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्कॉर्ड। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला तो गूगल समर ऑफ कोड, एवरीबडी नोज अबाउट इट, गूगल समर ऑफ कोड 12 वीक्स लॉन्ग एंड स्टफ। ठीक है, ये हो गया आउटरीची भी ओपन सोर्स एक इवेंट है जो होता है। गर्लस्क्रिप्ट समर ऑफ कोड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गर्लस्क्रिप्ट फाउंडेशन, ओपन समर ऑफ कोड एंड बाउंटीफुल समर ऑफ कोड, एंड बहुत सारे हैं। ये हैक्टोबर फेस्ट एवरीवन नोज, एनडब्ल्यूओसी,
of code, as you can see, there are a lot of like अभी अब इतने सारे तो हो गए, लेकिन इतने सारे में से बहुत खत्म भी हो चुके हैं ऑलरेडी तो अभी जान के क्या फायदा, राइट अब मैं बताता हूँ कि कितने चालू हुए हैं। ये लेट्स ग्रो मोर समर ऑफ कोड, ये भी अभी स्टार्ट होगा, वापस से स्टार्ट होगा, पिछली बार खत्म हो गया था। तो अब जो स्टार्ट होने वाले हैं वो ओपन सोर्स प्रोग्राम है। सबसे पहला तो गूगल समर ऑफ कोड, इसका तो हाइप बना ही हुआ है ऑलरेडी, लाइक हाइप बन चुका है। गूगल समर ऑफ कोड 2022 ये स्टार्ट होने वाला है जल्द, एंड आई गेस आउटरीच भी होना चाहिए, आउटरीच भी हो जाएगा। एंड गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड भी अब स्टार्ट होने वाला है। अब सबसे जल्दी जो स्टार्ट होने वाला है, आई एम टेलिंग यू गाइस, इज हेलो हेलो, हाँ हेलो, ब्रो, एक सिली डाउट था कि जो गर्ल स्क्रिप्ट है समर ऑफ कोड वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है? नहीं वो सबके लिए है, वो सबके लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। हाँ ये मुझे भी डाउट आया था इट इज नॉट सिली ये मुझे भी डाउट आया था व्हेन आई वाज इन माय फ्रेशमैन ईयर, लाइक मुझे भी डाउट आया था कि गर्ल स्क्रिप्ट अगर नाम लिखा है तो सिर्फ गर्ल्स के लिए, सबको होता है ये वाला, ये वाला। सो अभी जो सबसे, अगर आप बिगनर्स हो, आपने कभी ओपन सोर्स प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो ये जो सामने दिख रहा है, ये इसका रजिस्ट्रेशन 4 दिन के बाद बंद होने वाला है। मैं लिंक भेज दूंगा, ये लिंक काम नहीं करेगा, ये 20 का है। मैं लिंक अभी तुरंत भेज दूंगा, आई विल बी सेंडिंग दिस इन डिस्कॉर्ड, ओके, आई विल बी सेंडिंग दिस इन डिस्कॉर्ड। ये अभी 4 दिन में खत्म, लाइक इसका रजिस्ट्रेशन 4 दिन में खत्म होने वाला है, एंड ये प्रोग्राम 25 या 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट जीसॉक से थोड़ी, मतलब पहले तो छोटा स्टेप लेंगे ना, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम JGEC WOC, ओके। 1 महीने का होता है, अभी अनाउंस हो गया है, लाइक अभी हेलो, या सो आई बी शेयरिंग द लिंक, आई बी शेयरिंग द लिंक, ये अभी जल्द स्टार्ट होने वाला है। एंड आप इसमें अगर आप मेंटर बनना चाहते हो, यू कैन लाइक रजिस्टर एज मेंटर एज वेल। अगर पार्टिसिपेंट बनना चाहते हो, यू कैन रजिस्टर। अगर पहली बार है तो पार्टिसिपेंट ही, लाइक एज ए पार्टिसिपेंट ही पार्टिसिपेट करो, लाइक है ना। सो ये जो है अभी 4 दिन के बाद इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। आई बी सेंडिंग द लिंक्स, ऑल ऑफ द लिंक्स टुडे, ओके। ये सारे जितने भी ये 26, 27, 28 एक ओपन सोर्स डाउट प्रोग्राम और है। था कि जैसे मैं हाँ अभी कंप्लीटली बिगनर हूँ तो मुझे ऐसे करना चाहिए हाँ पार्टिसिपेट? हाँ, ट्राई करना चाहिए एक्चुअली। मतलब देखो कैसे? ब्रो, हाँ मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बोला वो गिटहब का कर लो, 11 वीडियो कर लो, वो 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, ठीक है, वो 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, गिटहब कर लो, दैट विल बी फाइन, ओके। उसके बाद JGEC WOC में, ये JWOC में आप जो है इसको भर दो, फॉर्म भर दो, रजिस्टर कर दो, ओके। रजिस्टर करने के बाद आप, आपको तब पता चलेगा ना कि चीजें कैसे काम करती हैं, है ना। आपको तभी तो पता चलेगा, ये उतना बड़ा लाइक ये प्रोग्राम है, ओपन सोर्स प्रोग्राम उसी के लिए तो है कि आपको पता चले कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे लाइक पीपल ऑफ सेम प्रोजेक्ट्स वर्क टुगेदर आइदर ऑन मेलिंग लिस्ट और स्लैक और डिस्कॉर्ड। मोस्टली कुछ कुछ स्लैक पे होते हैं, दोज ऑफ यू लाइक डोंट नो स्लैक, वो गूगल का जो आता है डिस्कॉर्ड जैसा, हाँ। सो स्लैक स्लैक पे होती है लाइक, या फिर डिस्कॉर्ड पे होती है, ठीक है। तो आपको उससे पता चलेगा, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करोगे देन आपको इससे पता चलेगा दैट हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको जितने भी मेंटर्स मिलेंगे वो सारे के सारे दे आर लाइक वेरी हेल्पफुल, ओके। वो सभी आपके लिए लाइक दे विल हेल्प यू। अगर कहीं पे भी दिक्कत है, पुल रिक्वेस्ट जनरेट करने में कुछ भी में दिक्कत है, किसी भी टाइप में दिक्कत है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। सो दे विल बी हेल्पिंग यू। सो इसलिए अगर आज तक कोई भी नहीं किए हो, किए भी हो फिर भी इसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। सो इट विल इंप्रूव योर लाइक गिटहब स्किल्स एंड डेवलपमेंट स्किल्स ओनली, राइट। इससे कुछ बुरा तो नहीं होगा, हाँ है ना। सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। सो एनी मोर डाउट्स? हेलो, नो ब्रो, थैंक फॉर क्लियरिंग माय डाउट। या आराम से पार्टिसिपेट करो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होगी, ऑब्वियस है, सबसे होती है, पहली बार सबसे होती है। आराम से वहां पे 1000 लोग बैठे होंगे जो तुम डाउट पूछोगे ब्रो, एंड देन दे विल सॉल्व इट एज सून इससे एज नेटवर्क पॉसिबल। भी बिल्ड होता है ना? बहुत ज्यादा, मैंने बहुत सुना ज्यादा। है कि जैसे जी शॉप में जाते हैं तो नेटवर्क भी बिल्ड होता है, लोगों से मिलने को मिलता है। हम्म, और एग्जैक्टली, नेटवर्क भी बिल्ड होता है। जैसे कि मैंने जो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था वो मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शंस हैं अभी। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप जिनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपने कंट्रीब्यूशन बनाया है, उससे आपके गिटहब के स्टैट्स भी बढ़ेंगे, गिटहब के कंट्रीब्यूशंस बढ़ेंगे। हाँ एक और चीज,
आप अगर देखते होगे कि सबका जीसॉक नहीं होता है या फिर सबका आउटरीच या एमएलएच फेलोशिप सबका नहीं होता है। रीजन इज कि पहले किसी ने कुछ गिटहब कंट्रीब्यूशन लाइक किया ही नहीं होता है। डायरेक्ट कुछ लोग होते हैं लाइक देयर आर सम पीपल हु डायरेक्टली गो फॉर जीसॉक, उनका गिटहब पे स्टार्ट 0 होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पहले छोटे छोटे विंटर ऑफ कोर्स या समर ऑफ कोर्स जो भी ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दोज प्रोग्राम्स बिकॉज दैट विल हेल्प अस improve our गिटहब स्किल्स। ओके, अब आप कोई भी अगर इफ समवन इज गोइंग टू जीसॉक, ओके ठीक है, वहां पे भी डाउट क्लियर करने के लिए होंगे अगर आपसे कोई इशू नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, बट दे डोंट हैव मच टाइम। उतने टाइम नहीं है उनको कि अगर आपसे पुल रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा तो पुल रिक्वेस्ट बताएंगे, उतना टाइम नहीं होता उनके पास। ओके, सो वो सब दिक्कत ना हो इसलिए ये सब प्रोग्राम्स हम करते हैं। और ये सब प्रोग्राम से हमें डेवलपमेंट स्किल्स भी बढ़ती हैं, हमारी गिटहब स्किल्स एज वेल। ओके, और उसके साथ ही साथ गिटहब स्किल्स के साथ हमारा जो है वो नेटवर्क और गिटहब स्टैट्स भी बढ़ता है, लाइक नंबर ऑफ गिटहब कंट्रीब्यूशंस। ओके, सो इट विल लाइक इफ एनीवन विल सी योर नंबर ऑफ लाइक गिटहब कंट्रीब्यूशंस मेड इन अ ईयर, it will, if you have high number of github contributions, let's say 1900 1000 approx, okay, then it will like have a great impact on them। okay, उसको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है। इट इज लाइक दैट। अगर आप जीसॉक के लिए भी अप्लाई करते हो, दे विल सी योर गिटहब कि कितने कंट्रीब्यूशंस हैं आपके, कितने कंट्रीब्यूशंस हैं। अगर जीसॉक पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, अगर मेरे मैंने परसों ही गिटहब अकाउंट बनाया है और कल को जीसॉक पे कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ तो कैसे होगा, है ना। अगर परसों ही गिटहब अकाउंट बनाया है और कल को जीसॉक से, तो वैसे चीजें नहीं होती। वी हैव टू लाइक कंट्रीब्यूट, हमें बेसिक आना चाहिए, हमें पहले कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए। जीसॉक मोस्टली लोगों का वैसे ही निकलता है जिन्होंने पहले से कंट्रीब्यूट किया है। पहली बार डायरेक्ट जीसॉक किसी का नहीं होता, मतलब अकाउंट बनाया हो गया, ऐसा नहीं होता। बिकॉज दे सी आवर गिटहब प्रोफाइल, दे सी हाउ लॉन्ग वी हैव बीन विद द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस। ओपन सोर्स में गिटहब में लाइक वो लोग जीसॉक में यही देखते हैं। लाइक वन ऑफ माय सीनियर हु क्रैक्ड जीसॉक, ही टोल्ड मी दैट ओपन सोर्स ये मैटर नहीं करता कि आपने किस कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, आपने कितने लंबे टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंट्रीब्यूट किया है, दैट मैटर्स। ओके, सो दिस जीसॉक पीपल सी दैट लाइक इफ यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स जैसे कि जीसॉक, एमएलएच फेलोशिप, फोशेशिया कोड हिट, या फिर लिनक्स फाउंडेशन का जो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, एलिफेंट मेंटरशिप। ओके, सो ये लोग जो है आपके गिटहब कंट्रीब्यूशंस देखते हैं एंड दे सी दैट यस दिस गाय हैज मेड नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस, दिस गाय हैज मेड नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस एंड इट ही इज एक्टिव ऑन गिटहब। ओके, सो वैसे वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो आई गेस आई हैव क्लियर्ड आउट ऑल डाउट्स। किसी को भी कोई डाउट्स है, किसी को, एनीवन? if not, then we can wrap up the session. Like I have मुझे इतना ही बताना था, like all the resources I followed, what is open तो source मुझे technique। एक और डाउट था कि हमें हाँ हाँ पता कैसे चले ऐसे कोई वेबसाइट है जिसमें नोटिफिकेशन आ जाए कि अभी ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है, हमें खुद से ही ट्रैक ऐसा रखना पड़ेगा? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है फ्रेंड, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। ऐसा कोई वेबसाइट होता जो नोटिफाई कर देता तो हमें खुद ही ट्रैक रखना होता है। इसीलिए तो ये लिस्ट बनाई गई है ना, इसीलिए लिस्ट बनाई गई है कि कौन से समर में होंगे, कौन से विंटर में होंगे। सो इसलिए लिस्ट बनाई गई है कि हाँ, आप टाइम टू टाइम आपको खुद टाइमलाइन चेक करना होगा कि क्या ये अभी हो रहा है, क्या अभी नहीं। ऐसा कोई वेबसाइट होता तो लाइक बहुत ही अच्छा होता, बट अभी तक तो नहीं है वैसा कोई वेबसाइट मेरे नॉलेज में ऐसा कोई अभी तक मुझे नहीं पता कोई वेबसाइट है जो ऐसे नोटिफाई कर देती है कि कौन सा ओपन सोर्स प्रोग्राम या फिर इवेंट आने वाला है। बट ये लिस्ट दे दिया है। 28 ओपन सोर्स प्रोग्राम तो बहुत हैं, 28 बहुत होते हैं। एक दो महीने, 3 महीने चलता है। सो अगर 10 भी हुए तो कितने 20 महीने हो जाएंगे, 2 साल 1.5 साल लगभग। ठीक है, तो अगर आप करते हो देन इट इज गुड। ठीक है, इतने ओपन सोर्स प्रोग्राम्स मैं ही बता दूंगा कितने कब होते हैं। ये तो अभी होने वाला है, JWOC डेल्टा विंटर ऑफ कोड, ये विंटर्स में होता था, पिछले साल नहीं हुआ। सीजन ऑफ केडी का पता नहीं, ये जनवरी में होगा। ये चल रहा है, इसमें मैं हूँ अभी, ये चल रहा है। स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड अभी चल रहा है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन तो कब के खत्म हो गए, अभी चल रहा है। ये 3 महीने चलता है, ये अभी चल रहा है, खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल आएगा। सो अभी विंटर ऑफ कोड्स तो अब एक आध ही बचे हैं, बाकी तो कुछ हो ही गए हैं। बाकी तो अब जितने होने थे वो हो गए, और जितने बचे हैं वो तो ठीक है। अब समर ऑफ कोर्स जितने हैं, समर ऑफ कोर्स वाले जितने, वो सारे आएंगे। गर्ल स्क्रिप्ट हो तो गर्ल स्क्रिप्ट पे जितने भी बिगनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट ले सकते हैं। गर्ल स्क्रिप्ट मोस्टली सेलेक्ट कर लेता है। तो जितने भी बिगनर्स हैं या फिर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है कुछ भी, गर्ल स्क्रिप्ट जो है, गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में आप
अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट होने के चांसेस लाइक इट इज वेरी लाइक इट इज नॉट दैट टफ ऑल्सो, इट इज नॉट दैट ईजी ऑल्सो, बट मोस्टली लोग सेलेक्ट हो जाते हैं गर्ल्स समर ऑफ कोड में। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। सो और किसी को डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस? दिस वाज माय लिस्ट दैट आई फॉलोड इन माय फ्रेशमैन ईयर एंड करंटली आल्सो आई एम फॉलोइंग दिस। मैं रेगुलरली इस पे चेक करता हूँ कि कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, कौन से नहीं आए हैं। इसलिए तो आई न्यू दैट JWOC जो JGEC ये जो है अभी इसको 4 दिन में इसका खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ये अभी चालू है रजिस्ट्रेशन। आई विल बी सेंडिंग द ऑल द लिंक्स। अभी मैं सेंड कर दूंगा इस सेशन के बाद। ओके सो ये अभी चालू है। अभी मतलब अभी अगर कोई ओपन सोर्स में स्टार्ट करना चाहता है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। 1 महीने का होता है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है कि एकदम प्रो होना चाहिए। एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज करके पूरी रिक्वेस्ट जनरेट कर दो यार। स्टार्टिंग तो वैसे ही करते हैं सभी, है ना? सो अभी तो ये स्टार्ट होने वाला है, और कुछ भी स्टार्ट होगा I'll notify you, like I or any of the like community moderators will notify you in the like channels, respective channels. Okay, so don't worry about that. You are in the Cuvette space, so that is why. Okay, so और किसी को any doubt? Any doubt, or we can wrap up the session, I guess. Hello. Hello. Anyone? Any doubts? I guess no. इससे तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसे जनरली अगर कुछ एडवाइस देना चाहो, जैसे अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। Okay. मैं बस यही कहूँगा दैट ये सबसे पहले ये इस पे वेब डेवलपमेंट करते हो ब्रो? आप क्या करते हो? कंप्लीट करी वेब डेवलपमेंट, मैंने स्टार्ट ही करी थी कोड विद हैरी से ही। हाँ, वेब डेवलपमेंट HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आता है ना, HTML CSS भी आता है, बस CSS तक भी आता है। देन ऑल्सो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है दैट वी नीड टू बी प्रो। हाँ, अगर कुछ लाइक HTML CSS भी आता है तो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रो आप इट कौन इज से नॉट। उससे हो ईयर, मतलब कॉलेज अगर सेकेंड बता ईयर में हूँ सकते? ब्रदर मैं कॉलेज। आई एम फ्रॉम ITER भुवनेश्वर। अच्छा। Yes, yes, yes. I'm from ITR Bhubaneswar. Yes. So I'll suggest you, bro, that you should like participate in this. Okay, and everyone who is looking to participate, start his or her open source journey, or continue like और कोई प्रोग्राम ढूंढ रहे थे पहले से, प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट किए हो और प्रोग्राम्स ढूंढ रहे थे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये मैं बता दूं कि ये इसमें कर लो। बस इसमें आपको रजिस्टर करना होगा। जब भी स्टार्ट होगा आपको ये प्रोजेक्ट चूज कर लो। प्रोजेक्ट मान लो कोई आदमी वेबसाइट बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, उसमें बस आपका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कुछ भी। मान लो उसका नेफ बार चेंज कर दिया, पैडिंग मार्जिन कुछ भी दे दिया, या फिर रेस्पॉन्सिवनेस बना दिया, मीडिया क्वेरीज लगा दिए, बूटस्ट्रैप लगा दिए, कुछ भी लगा दिए। आप उस कोड को करो, ठीक है, एंड देन यू कैन लाइक start or kick off your open source journey. Okay, so I guess you guys don't have any doubts. बस मुझे एक चीज और कहना है लास्ट में। लाइक वी एट क्यूवेट, हम लोग जितने भी कम्युनिटी मॉडरेटर्स हैं, लाइक वी आर लाइक इतने सेशंस हो रहे हैं, इतने इवेंट्स हो रहे हैं। सो बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे लाइक क्यूवेट के अंदर, फैमिली के अंदर जितने भी डिस्कॉर्ड के अंदर मेंबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जितने भी इवेंट्स होते हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, अगर हो ही रहा है तो सभी देखें, है ना, सबके फायदे के लिए हो। तो दैट वाज आई वांटेड टू से कि अगर है तो अपने क्लासमेट जितने भी हैं, कॉलेज के ग्रुप, सोसाइटीज होते हैं, क्लब्स होते हैं, आप वहाँ पे शेयर करो, ताकि अगर ओपन सोर्स पे डिस्कशन चल रहा है या फिर कभी DSA पे अगर लाइक एनी टॉपिक, लाइक सपोज बाइनरी सर्च पे चल रहा है, किसी को इंटरेस्ट है बाइनरी सर्च में, DSA पे इंटरेस्ट है, तो वो इस ज्वाइन कर ले, है ना, वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो मिस आउट ना करे इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आप तो इससे सभी का फायदा हो जाएगा, राइट? अगर आपके पास अभी 28, मेरे पास थे अभी आधे घंटे पहले तक, सिर्फ मुझे पता था ये 28 ओपन सोर्स प्रोग्राम्स। अब सबको पता चल गया, मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, तो ऐसे सबको पता चलते रहेगा, राइट? वी आर शेयरिंग द रिसोर्सेज ओवर हियर। सो बस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर कोई इवेंट होता है, if we notify you that okay this event is going to happen today 6:30 or something, so आप जो है अपने सोसाइटीज जितने भी हैं, लाइक फ्रेंड्स को आप एटलीस्ट शेयर कर दो, जो इंटरेस्टेड हो वो खुद आ जाएंगे, ठीक है? So with that, let's wrap this session, and thank you all for joining this, and that's all. चलिए, thank you everyone, have a great day. Thanks a lot for attending, guys. Hope you learned something of value from here. वेरी अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी मिला। थैंक्स सचिन ब्रो। Thank you so much, thank you so much, thank you so much.